Hello everyone. This one is our last topic, nucleus. We have already discussed about the all organelles which present in the cell, and this one is our last one. So, and very important one because all the functions of cell are depend on this organelle, nucleus. न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था. He saw a dense particle which lie in the cell and studied about it. Later, he concluded that that particle is nucleus, and he proposed a structure which is shown here. In that, we can see the parts of the nucleus. Here, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट होते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पोर्स? इन पोर्स का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन या आरएनएस को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आ देना या फिर न्यूक्लियस से किसी भी प्रोटीन या राइबोसोम को साइटोप्लाज्म में भेजना. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टेक्स प्लेस थ्रू दीज पोर्स. इसमें एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं न्यूक्लियोलस. व्हाट दिस न्यूक्लियोलस इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इट इज द डेंस पार्ट ऑफ दैट न्यूक्लियस. इसमें हमारी जो जेनेटिक मटेरियल होती है या फिर हमारी जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने वाली जेनेटिक मटेरियल है, इंफॉर्मेशन है, वो कंपोज होती है. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और ये है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म. व्हाट इज दिस न्यूक्लियोप्लाज्म? We have already studied that in cell, cytoplasm is present in which all type of functions takes place. Same here, न्यूक्लियोप्लाज्म भी न्यूक्लियस का एक सोल होता है जिसमें इसमें होने वाली सारी प्रक्रियाएं या फिर सारे फंक्शंस टेक्स प्लेस करते हैं. अब इसमें आप लास्ट एक देखेंगे बट नॉट द लीस्ट, क्रोमेटिन. व्हाट इज दिस क्रोमेटिन? क्रोमेटिन इज द थिंग which contain DNA. Wow. DNA. What is this DNA? DNA is our genetic material which transfer from one generation to next generation. We will discuss about it later. Now let's just look towards the structure of the nucleus. Here, nucleus is described by Robert Brown and the chromatin is derived by the Fleming. This means the genetic material is mainly shown by the Fleming. Nucleus is a double membrane bound organelle, outer layer and inner layer. The outer layer contains ribosomes. You all know the main function of ribosomes takes place during the formation of proteins. So, it is very helpful in the formation of proteins. Let me give you some extra knowledge here. हमारे जितने भी एंड्रो मेम्ब्रेन सिस्टम की जो ऑर्गेनेल्स थी वो सब हमारे न्यूक्लियस के आउटर लेयर की फोल्डिंग से ही बनती है. जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की वो एक्सटेंशन ले लेती है और बाकी सारी ऑर्गेनेल्स को प्रोड्यूस करती है. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन्स पोर्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स टुवर्ड्स और थ्रू इन बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. हमारी बायोलॉजी में बहुत सारे एक्सेप्शंस प्रेजेंट हैं. हेयर आल्सो एक्सेप्शंस आर प्रेजेंट. वी ऑल नो न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेल्स, बट there are two cells which do not need nucleus for their functioning, and these are erythrocytes or RBCs in human being, RBCs red blood cells, right? And sieve tube cells in vascular plants. You all know, we heard many times that bone marrow is very important in the human beings because all types of erythrocytes are formed in bone marrow. So their formation is not dependent on them, so they don't need to divide themselves, but they produce in bone marrow, and their function is to transport oxygen from one place to another. So their main work is just to transport oxygen. That's why they don't need nucleus. And next cells are sieve tube cells. They are dead in nature and very useful in the transportation of water from roots to the upper parts of the plant. That's why they also don't need any type of nucleus. The reason nucleoplasm contain nucleolus and chromatin. न्यूक्लियोप्लाज्म में जो न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन होता है
वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे लिए यूजफुल रहते हैं वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में एक रिलेशनशिप बनाने के लिए। न्यूक्लियस इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एंड स्फेरिकल। मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियस है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स की पढ़ाई की थी, देन वी सॉ दैट न्यूक्लियस इज आल्सो प्रेजेंट देयर, राइट? सो दिस may be present in the prokaryotic cells also. Nucleus contain DNA which is contained in chromatin. जो हमारा DNA होता है वो हमारे क्रोमेटिन पर प्रेजेंट होता है। और हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स है उनका नंबर होता है 46. We can also say them 23 pairs. Here 22 pairs are allosomes which are responsible for the cell properties, and 2 pairs is for the sex chromosomes. Chromosome contains centromere on disc-shaped kinetochore. When you go through any exam, this question may arise that what is this kinetochore is and what is the importance of it. When cell divides, the chromosomes also takes place division. So this structure plays a very important role in the division of the chromosomes. How its presence on the chromosomes is very important for the segregation of the chromosome during the formation of the new cell, because each and every particle in our body goes through a division when a cell going to divide. There are different types of chromosome on the base of the presence of centromere on it during the cell division. Metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric. They can be defined according to the position of the centromere. Last one is that non-staining secondary constructions called satellites. When the chromosomes or the chromatin where the staining is not done, we don't know what is that part is for use, that part is known as satellite. But they are very useful in the cases like maternal or paternity cases. ये सिर्फ उन्हीं में सेम होंगे जो एक दूसरे के रिलेशनशिप में होंगे। जब हम कभी ये पता करना चाहते हैं कि जो बच्चा है वो किस पेरेंट का है, तो दे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज दीज आर द मेन कंपाउंड ऑफ डीएनए विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर siblings or their offsprings. Okay, let me have a revision here. Nucleus described by Robert Brown in 1831. It has different types of parts. First one is nucleus and nuclear membrane, nucleopore, chromatin, and nucleoplasm. Next, it has two layers, outer layer and inner layer. Exception is also here, absence of nucleus in erythrocytes and seed tube cells of vascular plants. न्यूक्लियोलस जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, और जो हमारा डीएनए है उसके 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो जिन्हें हम 23 पेयर्स भी कह सकते हैं। उनमें से 22 पेयर्स एलोसोम्स होते हैं और जो 1 पेयर है वो हमारा वो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। और इस पर एक क्रोमोसोम सेंट्रोमियर्स प्रेजेंट रहते हैं डिस्क शेप पर, जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। ड्यू टू presence of centromeres, chromosomes can be divided into 4 types: metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric. यहाँ पर non staining secondary constructions होते हैं chromosomes में, जिनको बोलते हैं satellite. Thank you. I hope you all understand it. If you like it, then please like it and share it.